Assalamualaikum. Again, welcome back to Khirat Kids. This is Fatma Jamal, your host for today. हमने decide किया कि we're gonna do another live session just like previous times. We did a live session हमारे first page पे. So we have started this live session again, which is going to be about importance of learning coding in Pakistan, because a lot of you really liked our previous session and wanted to learn more about this concept. So we decided to introduce again. So we will be having our same instructors with us, Ms. Momna Khwaja and Umar Wasim. So Umar Wasim to help us with this. Assalamu alaikum, Fatima. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. Glad to have joined back again by popular demand. Thank you for hosting. No worries. How are you doing today, Miss Momna, Sir Umar? आज it's good. The weather is better here. हमें भी काफी गर्मी हो रही थी पिछले दिनों, so today it's better, it's pleasant, so it's a good start today. Okay. चलो शुक्र है. Over here वैसे तो बारिश हुई है तो बहुत बुरा हाल है as usual, but still better than at least the blistering heat. Yes, of course. तो अब like we discussed before, हमने एक session किया था. You guys remember it was a pretty long session and we discussed about everything we could intro, but this time we decided to keep the session short, attention span के लिए भी, and so we can obviously properly address some specific issues. So again we wanted to decide on the topic, and it was that the importance of learning coding in Pakistan especially. तो इसमें हम आप लोगों से डिस्कशन करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, because a lot of parents again जब मैं discussions कर रही थी they were concerned about why should we be concerned about coding and why should we are these actually beneficial, मतलब क्या फ़ायदा है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों को सिखाएं. So that's why I want to do this session again, ताकि we could let them know कि हम क्यों actually अपने बच्चों को ये चीज़ें समझाएं या कराएं. So I think if you're all ready, we can start. Is that all right? Yes, of course. So Ms. Momna, again, since you'll be our main instructor, inshallah, why is it important to introduce coding at a young age? Just like basic question. Basically, Fatima, what lies beneath coding are the concepts. ठीक है, coding के जो नीचे के concepts हैं, they all involve logical thinking, sequences, and you have to do you get problems and you have to solve them. And so when we start coding at an early age, तो उसमें ये फायदा होता है कि these skills are developed, or when these skills are developed, so this can help children in many ways. So it's basically is to start with coding normally is to develop the skills underneath the concept. जो उनको concepts coding के हम देते हैं, उनकी soft skills, logical thinking, problem solving skills, उनके brain की जो cognitive development है उनकी, जैसे for example how they think. They have to think logically, they have to see the problems and address them, decompose them into shorter problems, see the sequence, see the pattern. इस तरह की चीज़ें हम उनको सिखाते हैं ताकि उनकी सोचने की सलाहियत इस तरफ से खुल जाए. तो ये हमारा इसलिए हम चाहते हैं कि as early as possible इनको शुरू कराया जाए ताकि वो हर फिर इस अप्रोच को लेके आगे चल सके. उमर, आप कुछ अगर ऐड करना चाहें? फातिमा probably ड्रॉप हो गई हैं because of the weather condition, जो लाइट का प्रॉब्लम आज हुआ था पाकिस्तान में. हाँ जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ. एक्चुअली what you have said, it's about the concepts, और वो हम पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है. They should understand that coding is not just sitting on a computer. और इसके साथ जो आपके skills develop होते हैं, considering soft skills, वो they are very important. But adding to that, Miss Momna, what do you think? जैसे आपने अभी मेंशन किया, फॉर एग्जांपल, it's
जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं, resilience, टीम एंड कम्युनिकेशन, these skills are developed. तो मेरे ओपिनियन में तो अगर हम टीम्स एंड कम्युनिकेशन का फॉर एग्जांपल वेरी एक वी वर्क ऑन दिस स्पेसिफिक स्किल्स, तो इसमें तो आई बिलीव के बच्चों, क्योंकि कोडिंग ये कंसिडर की जाती है कि एक इंडिविजुअल है जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है एंड ही इज ट्राइंग टू कोड एवरीथिंग। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई बिलीव दैट के कोडिंग के अंदर हमने जब बच्चों को लेके आना है तो वी मेक श्योर दैट दे आर नॉट सिटिंग अलोन ऑन अ कंप्यूटर, दे वर्क इन अ ग्रुप, एक टास्क के ऊपर, एक एक्टिविटी के ऊपर, और जो आउटपुट हो वो दे ओन करें collectively. To what you think, that is there any other perspective जिसके अंदर team and communication is prominent? Uh, you're right, because this is something we try to teach them from the start. So Fatima, we dropped off and we were discussing how Yeah. team and collaboration is important, and how we can address that with coding. So obviously coding, अगर हम बड़े लेवल पे हम चले जाएं तो you would know कि इसके बहुत सारी branches होती हैं, and there's a proper team working on it. कोई यूजर इंटरफेस सामने वाले काम पे कर रहा होता है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा होता है, मतलब you have a team, graphic designers. So and it's not in coding also, it's everywhere. Wherever you have to be, Okay. you have to know how to work in a team. तो हमारा भी what we do and we will be doing is हम ये चीज़ बच्चों में कोशिश करेंगे कि there should be tasks that they cannot manage alone. They need a team partner जो उनके साथ Of उनको course. वो टास्क करने में हेल्प करेगा. तो इनपुट्स होंगी हर तरफ से, so that they can जो भी हम प्रॉब्लम्स देते हैं, normally what I do कि हमारे पास क्लास भी है तो उसको भी डिवाइड देम इनटू 2 टीम्स, और फिर वो दोनों टीम्स को सिमिलर टास्क देकर we do a healthy competition भी, और they have some challenges भी, और they have to do it together. तो जितने भी टास्क हम करवाते हैं नॉर्मली उसको हम टीम वर्क को इट गोज एट द बेस, और जब हम आगे स्क्रैच की तरफ जब दे विल मेक देयर गेम्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो विल डू एज अ क्लास. सो वी डू द कोई भी एनिमेशन हमने गेम बनानी है तो उसको पहले भी एज अ टीम भी फिगर आउट कैसे इसको बनाना कैसे है, विल गेट इनपुट फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, फिर वी मेक अ लिटिल मे बी ग्रुप्स ऑफ 2 सो दे कैन वर्क टुगेदर, और वो फिर they can bring their projects ताकि they know how to deal, or we can divide the task of the game कि ये बच्चा इसका कोड बनाएगा, ये वाला इसका, so that they know कि Hmm. final product is gonna be the contribution from all of them. So Okay. we So really focus on this. sorry to cut you off. So basically, we're learning about the fact that coding is not only just going to be influencing your teamwork, but it's going to be aiding your communication skills, right? Exactly. So at a very young age, because I actually had a Everywhere. parent come up to me who wasn't much more concerned कि अच्छा आपने क्या कराना है क्या नहीं कराना है. He was mainly focused on the fact that I want my child to be a problem solver, like he should know work on his problem solving skills. So I did assure him that we will be working on that and he can join the session with us as well. So again, can you also say that this is going to make them more resilient or perseverance? Like, is that something that you could add on to skills? Basically when you do code और हमारी एक्टिविटीज में भी we do that कि we add bugs, हम जानकर अक्सर आंसर्स गलत बना देते हैं Of और हम course. कभी कभी डेड एंड्स उनको दे देते हैं. एंड क्योंकि मेरे अपने आई हैव 2 किड्स तो दे डोंट लाइक इट, समटाइम्स दे जस्ट वांट टू गिव अप. जब उनका Yeah, इट्स नॉट गोइंग देयर वे, they would just okay, I don't want to do it anymore. So of because course. जब हम टीम और challenges और in the classroom environment we put them in that, so ताकि उनमें ये ability आए कि when there is a मतलब kind of resilience कि अगर कोई problem है, कोई dead end आ रहा है तो how to walk yourself around it, and we are there to help them out of course. हम उन्हें कभी-कभी hints भी दे देते हैं, कोई idea भी दे देते हैं, लेकिन they normally they are good at this. Once they put उनको होता है ना कि there's no way out, we have to find a solution. They do find astonishing solutions. कभी-कभी we are surprised. So this we really work on कि जब bugs आ रहे हैं, errors आ रहे हैं, difficult tasks हैं, तो you have to be persistent and you keep on trying and you fix that and it can be fixed. So this lies in the
With coding, it's kind of Omar can explain it further. Like it really is. You have errors and you have bugs and you have to be have very resilient to fight them off. Exactly. And this is what वही we तो add with in our activities also. yeah, even in like real life, since we work at the software house, so they it's a part of their process that कोई simple भी framework उन्होंने design करना होगा, there is a chance कि इसमें bug or error होगा, and then we of course have our QA testers to test that out and Hmm. manage everything. So it is a smart thing to incorporate that at an early age ताकि बच्चों को पता हो कि it's not a smooth process. Yes, There's exactly, gonna be some debugs that we have to take care of. exactly. But thank you for giving insight on that. So Romer, so again, जिस तरह हमने अपने last session में discuss किया था, जब हमने proper discussion किया था, proper examples ली थी toothpaste और इस तरह की, तो how can you stress on the fact कि how does coding actually promote logical thinking? How do we develop that? How is that possible? जी फातिमा, thank you very much for asking that. Actually, in computer, अगर हमने समझाने के लिए, एक बच्चे को समझाने के लिए या पेरेंट्स को समझाने के लिए, if we put that लॉजिकल थिंकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको एक वर्ड में पुट अप करें, तो इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम्स. और एल्गोरिथम्स इज द सीक्वेंस या कंडीशंस है यहाँ पे जहाँ पे आपने डिसीजंस लेने होते हैं. और वो एक्चुअली बिल्कुल इट्स द सेम थिंग दैट यू डू बीइंग अ पेरेंट इन योर लाइफ. आप कुछ एक्टिविटीज फॉलो करते हैं और व्हेन यू आर डूइंग दैट उसमें कुछ डिसीजंस आते हैं. एंड दिस इज काइंड ऑफ अ लॉजिकल थिंकिंग दैट यू हैव टू डू, बिकॉज इन अ सीक्वेंस आप देखते हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, और एज पर दैट डेवलपमेंट यू मेक द डिसीजन as per that. So this is kind of a very simple way of explaining the logical thinking. Now we take this to the art program जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आपसे पहले डिस्कस हुआ था फर्स्ट सेशन के अंदर, तो उनकी डेली लाइफ के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए तैयार होना है, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज दे हैव टू परफॉर्म अंटिल वो स्कूल तक पहुंचते हैं, अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है, फॉर जैसे मिस मोमना ने मेंशन किया, फॉर एग्जांपल वी इंटेंशनली इंट्रोड्यूस बग्स या कंडीशन या सिचुएशन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, एंड वी देन वी सी दैट हाउ अ चिल्ड्रन इज रिस्पोंडिंग, अ चाइल्ड इज रिस्पोंडिंग टू दैट. तो ये वही कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिथम का एक कॉन्सेप्ट है कोडिंग के अंदर. उसको अगर हम डेली लाइफ में आइदर एडल्ट फॉर एडल्ट और फॉर अ किड अगर हम उसको ले जाएं तो देन इट्स द सेम थिंग. लेकिन इसको फॉलो करते हुए और रियल टाइम जो लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो कि बच्चों की हैं उनकी लाइफ के अंदर, वो उसके साथ अटैच करके, दिस इज हाउ वी ट्राई टू क्रिएट द लॉजिकल थिंकिंग. Okay. So, all right. And आपको वैसे with your experience, आपको have you actually noticed a change when have you ever taught the same batch of children continuously? I'm not sure if you have. Sorry, Mona. It's for Umar. The question is for Umar. Anyone can answer. Like, I want to ask if you've noticed when you're teaching that have children actually responded? Like, you've noticed, okay, they are thinking logically. There is a Yes, change in the their thinking. actually, children normally they're very logical. Hmm. Adults, okay, when sometimes we are not very logical, and they just come up with okay, what's happening, because naturally उनकी natural tendency होती है towards logic. तो what logical thinking is, किसी भी प्रॉब्लम को आप ब्रेक डाउन करें, उसके स्टेप्स को रिकग्नाइज करें, और फिर आप उसका go towards a solution and you give it the solution. Everything can be done by that. So when we do problems, तो हम उनको प्रॉब्लम्स देते हैं, डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट रोबोट्स हैं, उनके अराउंड हम प्ले कार्ड से डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, दे आर ऑल अराउंड के उनकी इन स्किल्स को हम डेवलप कर सकें. और व्हेन आई टेक बैजेस, they're surprisingly sometimes they are so advanced कि मैं भी हैरान हो रही थी for their age. यहाँ पर बच्चे sometimes they start at 4 and then they're very good, and they have reasoning and they have logics about everything. So yes, they think logically naturally. We just kind of give them the atmosphere जहाँ पे उसको ambience कह लें, जहाँ पे it Okay. can flourish. That's their All right. natural talent actually. Okay. And Ms. Omna, again, a question for you.
we've learned how in our session and in coding and in computers how we will be enhancing their problem solving skills, वो bugging वगैरह सब solve कर रहे होंगे, उसी वक्त activities कर रहे होंगे. But again, how can we say beyond the digital realm? How are we going to be dealing? How does it influence? How does early coding education enhance children's problem solving skills beyond the digital side? जी फातिमा, असल में वही जो मैंने शुरू किया था बात से कि ये जो कोडिंग अंडरनीथ कोडिंग आर द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और कॉन्सेप्ट सारे जो हैं दे अप्लाइड एवरीवेयर. सो वंस, क्योंकि दैट्स व्हाई वी वांट देम टू स्टार्ट अर्ली, ताकि व्हेन दे एक्सपोज्ड टू कि कोई आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या हाउ यू कैन थिंक लॉजिकली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये सारी जो चीज़ें हैं अगर वो इस हमारी गेम्स एक्टिविटीज़ में सीखेंगे और व्हेन दे विल कैरी ऑन विद कोडिंग, जब कंप्यूटर्स पे भी चले जाएंगे, सो दे हैव द सिमिलर एनवायरनमेंट और टीम वर्क स्पेशली, ये सारी दे आर एक्चुअली लाइफ रिलेटेड. आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी स्कूल में एकेडमिकली they have subjects sometimes they're difficult, so they would know how to break down a difficult problem to smaller steps and how to deal with them. ये भी हम especially decomposition के different वाली activities हैं, they have to decompose a challenge into smaller simpler challenges और फिर उसको वो ताकि they can solve it. So it's not always कि आपने एक sequence में लेके चलना होता. Sometimes you have to backwards काम करना है. They have to see what the problem is और फिर they have to आइडेंटिफाई कि इसका हम सोल्यूशन किस तरह कर सकते हैं, इसको डिकम्पोज करके छोटे पार्ट्स में हमने एड्रेस करना है या छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ी चीज़ बनानी है. सो ऑल दीज जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो उनकी स्पेशली एकेडमिकली, क्योंकि बच्चे हैं, दूसरी जो उनके स्कूल है, इट विल हैव देम really in that. And of course when they professionally, so obviously when they develop they learn a lot from all environments, and this would be a skill that would come in hand anyways. तो इमीडिएटली उनको अपना उसमें स्कूल में बहुत हेल्प करेगा एंड दे विद द पीयर्स आल्सो, एंड ऑब्वियसली व्हेन दे ग्रो अप इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव. Okay, so मुझे ये था कि since we've been working on this and trying to make this course as accessible as possible to all the people in DHA abhi, because we're starting out small, of course. So my concern mainly was, besides that, and I've been communicating with parents and clients who are interested in this course. अब यही था कि of course they were concerned कि अभी भी ये इतना popular नहीं हुआ. Besides a few schools, a lot of people have not made it yet popular. So Umar, my question was for you, that how do you think our schools, our educational institutions can promote coding at an early age? Because as far as I remember, Ms. Momna mentioned in a conversation कि Luxembourg में तो ये mandatory बन गया है. It's like absolutely necessary. So how do you think we can do it over here as well for education institutions? Once again, thank you very much. जैसे आपने mention किया, already you have said कि कुछ institutions जो हैं या कुछ schools जो हैं, they are doing it. और ये this is a positive step जो हम देख रहे हैं environment के अंदर के what those schools are doing. पहले तो वो अपने syllabus के अंदर they are integrated कि जी हमने code का जो एक activity है, we have to put them into our courses. फिर वो अपनी ट्रेनिंग जो है टीचर्स को दे आर इन्वॉल्व विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज वेल, और स्कूल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर. उसके अलावा आप देखें, आई होप आई हैव सीन इन माय लाइफ व्हेन आई वाज डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस के पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशंस बड़े होते थे. नाउ द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड द स्कूल्स एज वेल. कुछ स्कूल्स करवा रहे हैं और होपफुली दिस विल ग्रो एज वेल. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना है, जो कि यूरोप के अंदर भी है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड कर रहा है, वो है इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल पार्टनर्स और कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल पार्टनर्स. सो and I'm very grateful कि खरत ने इसके अंदर they have taken this step. आप देखें, being a software house, they have developed this course, and hopefully next steps the schools will be collaborating with this professional institute. So this is how I see it. So right now I believe that जो चीज़ें आ गई हैं schools के अंदर, उसके साथ collaboration is one of the important factor that schools or institutions have to work with.
All right, okay. I will say agree with that. I really wanted कि हमारे जो universities है ना, उन्होंने तो CS की degrees अब बहुत ज़्यादा popular कर दी हुई, and then we have Pasha, an organization that's promoting technology and of course all of coding and everything. But वही बात थी कि I wanted to address how important, again, to parents, to people who are watching this as well, that a few schools, even 1 to 2, have only been engaging in something like this. And it's very important कि if you do have that accessibility, you should be trying कि अब parents, teachers से खुद भी बात करें, because यहाँ पे system है कि unless parents want something तब वो होता है. Usually schools अपने curriculum में नहीं fit कर पाती हैं चीज़ें because they have to teach other stuff. But it's very important कि summer camps और कुछ activities हों. Because जब मैं भी course outline देख रही थी तो I was like, okay, there's a lot we have to cover, and a big thing for 2 weeks और parents के लिए कितना फ़ायदा है कि बच्चे की काफ़ी thinking इसमें improve होती है. But again, वही बात नहीं कि बच्चों का हमने attention span ध्यान रखना होता है. Of course, that's the main concern for us, and parents का भी main concern होता है कि parents के बच्चों की abilities कितनी strong है कि वो इन सब चीज़ों को understand कर सकें. So, Miss Momna, can coding, since you have the both of you have the experience, can coding be made fun and for learning for children? Can we make it that way? Exactly, Fatima. जो हमारे school में what we do and we will be doing here in Kerat also with kids, we make them into games. So when I mentioned कि हमारी जो भी कोई भी activity है, we want them to learn anything. उसमें we convert it into a game. It's either, for example, अगर उन्हें if and conditional सीखना है, we have a robot जिसमें पहले हम conditional को सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने scratch program में भी हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें कंडीशनल्स आएंगे इफ एंड देन कि अगर ऐसा हो तो फिर कैसे करना है. दैट्स Okay, फॉर्म yes. ऑफ रेस ट्रैक. मतलब उनके पास एक ट्रैक बना हुआ है, उसमें उनके पास वो हर्डल्स आएंगे और उसमें वो कैसे अपने हाउ दे कैन go around. They have to normally they have to code a robot before the starting, so they have to give all the commands in the start, and then it's not like a car you will do maneuvering कि अभी आया तो फटाफट कर लें. So they have to see अच्छा इसके बाद आपने लेफ्ट टर्न देना है, फिर इसके बाद 2 दफा आगे स्टेप्स जाकर फिर राइट टर्न देना है. So they have to code the robot, but it could be, or the second team will be doing the same. So it's always just if and then conditional statements form of a race. और बाकी हमारी activities सारी ऐसे हैं कि they're converted जैसे coordinates we learn with like scavenger hunt या we always do. We have a coordinate map or mat है उसके ऊपर we'll do some activities to learn coordinates. So this is how we do, like give them the concepts. Or when we develop actual games on Scratch, उसमें we will do it, we decompose it and we do it as a team. और उसके बाद फिर after even in the Scratch projects we always have one activity related to the project and that's a game. और उस प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल उस स्क्रैच प्रोजेक्ट में अगर हम लूप्स यूज कर रहे हैं तो द एक्टिविटी विड बी अराउंड लूप्स बट इट वुड बी अ गेम कि Okay. बच्चों ने रेस जीतनी जल्दी कैसे है. इफ दे अप्लाई लूप कॉन्सेप्ट तो उनका रोबोट तेज चलेगा. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. लेकिन इट्स ऑल अबाउट वी गिव कॉन्सेप्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ गेम्स. दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस समर स्कूल. देन द चिल्ड्रन डोंट रियली गेम्स में नॉर्मली दे कैन कॉन्सेंट्रेट. पढ़ाई में they cannot, but when it's a game, then they kind of they're good at concentrating. Of course, वो तो हमें idea है. I had to do that. But अच्छा, आपकी मुझे ये बात बहुत interesting लगी है, the if and then. Is it like I know the concept we are introducing is very at a very young age, very simple. But जब मैंने coding सीखी थी, HTML and everything, तो we did learn about if statements. कि अगर ये नहीं Exactly. होता तो उसकी जगह कौन सी command होती है. So is that like a continuation of that? मैं तो बहुत complex में बात कर रही हूँ. But It's is basically, yes, the it's same it's a concept? back step. Like it's not a, yes, it is that if and then जो आपके कोडिंग में बहुत चूज करने आपको पड़ते हैं तो वो आप अब एवरीडे लाइफ में भी करते हैं. If and then it's like they do it every day. अब फॉर एग्जांपल जैसे आप रोज की रूटीन है कि आपने बच्चों ने बेड में जाना है. और इफ it's Friday, then they don't have to sleep at 8 o'clock. So it's an if Okay. and then. So if it's like for example, Zohar ki namaz we pray at home, but if it's Friday, then we pray at mosque. So
अभी भी if and then they apply, लेकिन यही if and then we use the coding robots and we do it in a form of game कि अगर सामने hurdle है तो then you have to go left. If you detect some object in front of you, then you cannot give the front command, then you have to give the left command. तो इस तरह की छोटी छोटी games के साथ हम उनको with the older group 8 to 10 we do give them the the concept of the words also sometimes with the game, so that they अगर they hear it afterwards तो उनको पता हो कि हम असल में सीख क्या रहे हैं. But with the younger group it's all about giving them the concepts and never talk about the terminologies. Of course. उनके दिमाग पे at least it starts to comprehend what we Just to mean. make them think in that way. Okay. So the thing about my concern mostly was that I really wanted to feel like, because you both have lived in Pakistan as well, and you both are now experienced instructors in Luxembourg. Now the thing was that the way we've had healthy conversations about certain जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि किस तरह एजुकेशन यहाँ का जो मेथड्स हैं वो आउटडेट हो गए हैं, वो डिफरेंट हो गए हुए हैं, एंड पेरेंट्स आर वेरी यू कुड से कंसर्न्ड या हेजिटेंट कि हम इस तरह किसी आउट ऑफ द वे समर कैंप में करें, कुछ ना करें. वो होता है उनको बिकॉज वी सकम टू ओल्ड मेथड्स. So I still have this question from you guys. I have my own opinions on this as well. But why do you think it's coding education is not stressed upon in Pakistan? I think, in my opinion, there are two very straightforward things. First, of course, is the lack of awareness. अभी भी जैसे आप जानती हैं, because you have experienced that in your professional life or education with. Yes, of course. लेकिन ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं, हर किसी को ये opportunity नहीं मिली, even parents के लिए भी और teachers के लिए भी. तो ये तो पहला तो ये पॉइंट है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है. फिर दूसरा जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज. सारी बात है, आपने ट्रेन होना, अगर टीचर्स दे हैव टू गेट ट्रेन, देन दे हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर सम गाइडेंस. तो रिसोर्सेज भी मिसिंग है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई होप और हमारा प्रोग्राम, आई होप दे आर गोइंग टू चेंज दैट, कि जितने भी स्किल्स के बारे में मिस मोमना ने बात की है या अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जब वो स्किल्स बच्चों में आएंगे नजर पेरेंट्स को, तो दे विल गेट इंस्पायर्ड. तो ये हमारा, आई होप दिस इज द गोल वी आर गोइंग टू अचीव, दैट पेरेंट्स विल सी. और वो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट के जी 5 on 5th day or last day of the course, the parents will come and the student so their kids will show them what they have learned, projects की सूरत में. तो वहाँ पे they will see how actually the things have happened and they will get inspired and they will get awareness as well. So ये चीज़ें हैं, hopefully we will change. इंशाल्लाह. अब मेरी यही ओपिनियन था बिकॉज हमारे ये सीन है कि until something is necessary on us तब तक हम नहीं उसको पढ़ते. मैंने आज तक कोडिंग नहीं पढ़ी, लेकिन जब मुझे यूनिवर्सिटी में कोर्स मिला तो मुझे पढ़ना पड़ा था. उससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखना था. तो आई थिंक कि अगर हम शुरू से ये बात ऑप्शन के तौर पे डाल देना तो देयर इज अ चांस कि आपका इंटरेस्ट आ जाए. और स्कूल्स का भी इस तरह है कि अनटिल एंड अनलेस दे उनके ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं होती ना कि हमने ये इंट्रोड्यूस करना है, वो नहीं करते. देयर वेरी लेस स्कूल्स जो लाइक आर्स जो एज एन ऑप्शन फाइनली ऑफर करते हैं चीज़. हालांकि वेयर वर्क प्लेस, बट वी बिलीव दैट दिस इज समथिंग वी नीड टू डू. But again, wrapping this up with this last question, how do you think we can work on this, and why do you believe, what ways can we work on this? For the schools, I would really recommend कि हम लोग probably इसलिए भी नहीं करते कि obviously कोई compulsion नहीं आती and we don't have trained staff for that also. So maybe again what Umar suggested, a collaboration between the professional institutions and the schools could help or training their staff. यहाँ पे भी we have some courses where I work. We go and train the staff also. So that's we go about it. Okay, we can train the staff and then and we can give the syllabus to the schools and kind of maybe aware the parents so they can give the demand. When demand is there, then as you said, okay, it could come then, inshallah. Yeah, exactly. And providing, I think governments and we can work on internet. People have to be, ये बात है कि accessibility नहीं होती ना parents के पास. हमारे काफ़ी जो parents थे, they were concerned about having laptops and tabs.
जी So of course, providing that in schools, that can help us out, inshallah, hopefully. But thank you so much for both of you for joining us again. मैंने make sure किया था कि session short रखूं, so we don't take more of your precious time. And hopefully, since Eid is coming, and so Eid Mubarak to you both again. Jazakallah Fatma, so थैंक much. यू फातिमा, आपको भी And नमाज मुबारक. thank you. And inshallah, I'm very excited to meet you both when you guys will be coming here. And hopefully, whoever is watching and parents, you guys can also message us and, of course, meet our instructors whenever you guys are going to be enrolling your kids. And if you have any questions, you guys can ask us. If not, then we'll be concluding this session for today. Thank you. थैंक यू फातिमा. No worries. No worries. I don't think we have any questions for today. I think काफी छोटा session था, काफी to the point था. So I think we'll just wrap this up then. I can't hear you. Thank you very much. Mona, your mic is off. Oh, thank you Fatima, and then see you soon inshallah in Pakistan. Inshallah. No worries. Thank you so much.